Stand right up. 1, 2. All school welcomes you, sir. Fatima Convent Senior Secondary School. We want to extend our heartfelt appreciation and gratitude for your help. It's truly an honor to have you with us, sir, sharing your expertise and insights on such a critical topic as cybersecurity. Your commitment to educating our students and staff about the importance of online security is commendable, and we are privileged to benefit from your knowledge. Now, Good morning everyone. A very warm welcome to all present here. Thank you, sister. In today's rapidly evolving technological landscape, where the boundaries of our virtual existence are expanding at an unprecedented rate, the need for safeguarding our cyberspace has become more paramount than ever before. The cyber threats have only grown more complex and multifaceted. cyber safety is not merely a matter of personal responsibility. It is a collective obligation that extends to all individuals, organizations, and communities. It involves fostering a culture of digital literacy, resilience, and proactive measures that may be far-reaching and detrimental, ranging from data breaches and identity theft to cyberbullying, fraud, and even more sophisticated disrupt your entire systems and networks. The significance of cyber safety for students cannot be underscored enough. In an age where young minds are immersed in an ever-expanding digital universe, equipping them with the necessary tools to navigate this virtual landscape safely is paramount. By fostering a culture of cyber safety among the students, we not only protect their personal information and online identity, but also instill in them a strong sense of digital resilience and ethical responsibility. Educating students about the potential risks of cyberbullying, online harassment, and exposure to well-being and emotional health
By promoting safe online practices and encouraging open communication, we create an environment where students feel empowered to utilize the internet as a tool for learning, collaboration, and personal growth, while remaining vigilant against the potential threats. But there is no need to worry, as we have among us the subject matter experts who will guide us through this complex topic of cyber safety. We now request the team to come upon and enlighten us. The stage is all yours, sir. First, we call upon SHO Sir Manu. Hello everyone, good morning to all of you. Because your assembly was over and you all the informative session that we'll have with us, and I hope all of you will listen to it carefully and try to grab some things which can be very important to you while handling internet and your mobile phones basically. So if we talk about cyber security for US, because they're the pioneers in information technology, or हम not copying them but making everyone a responsibility. The basic reason is that internet has penetrated deeply in our society, and we have one of the largest users of internet or mobile phones or smartphones in the world. We are second only to China when it comes to the number of people using the mobile phones and also internet. So it becomes all the more important because you are the ones who use internet, and you have to use it judiciously so that it is imperative that we use it judiciously, because internet is infinite and signs as languages to communicate ourselves to each other. और आज की बात करें तो we can talk to anyone in the world using a mobile phone. So you can understand how communication has developed as humans have evolved, right? And how technology has proliferated communication systems throughout the world. ये बहुत जरूरी है कि हम इस चीज को सहेज के रखें, right? Because anything and everything that we have is because of our minds. Human mind is developing new things, and the basic thing and the basic responsibility a human being has is to use it for the well-being of humanity as a whole. Right? Are you getting me? So what I'm trying to say is, hue and cry globally because electricity has been cut off from Gaza, right? And there's no water. When the government of India cut off internet services from Kashmir after they abrogated 370, there was a lot of hue and cry globally. The global media said कि भाई internet जो है, it is a part of right to life. We all know what is right to life. Things which are essential for a human being to live. So you can understand the gravity of the situation. How important internet is to us, and we have to use it in a positive manner. I know as a child, as a teenager, we have lots and lots of questions, and we're not afraid to explore. So, we face a lot of challenges and opportunities as well. Like cyber threats or cyber crimes that students or teenagers face is like, we have to be like social media related issues that we have. We all, I think, change once in 3 months. But for people like you, I think it has to be within a fortnight. Right? Because there's a lot of hackers out there
who share your passwords and personal information and which are available on the blackmail. So we all become conscious that the question that we are asking is pertinent or not, right? मैं अगर कोई सवाल पूछूंगा मैं सोचूंगा यार कोई सवाल बड़ा है छोटा नहीं होता ये हमें जान लेना है, right? So my advice to you is because we are celebrating October month as a cyber security month throughout India, and it is our responsibility as law enforcement agencies to educate people to know what cyber security is and what are the threats that we face in our day-to-day life patiently. And after me it will be Sub-Inspector Deepak who will talk about cyber security only, right? So, or sharing information with all of you. Thank you. To come forward for enlightening us with further knowledge. It's really mesmerizing. Heartful, your welcome was really, it take back me to my childhood memory lanes. You are amazing. We are here for your concern. We want you to be happy. For that, there are some rising interest of mobile is increasing day by day. All the parents and teachers are concerned that screen time of mobile is increasing day by day. And that is for physical harm also and its internet usage also. I will not tell you what is cyber. I will basically tell you what not to do on internet. I will ensure that you will be safe if you follow your screen time. Then you will more concentrate on your studies and you will be away from the distractions which are prevailing. We only use internet for just study purposes, references, and inquiries which your teachers or your parents could not be solved. Am I right? It means one person is using VPN in targeted. A very, very good morning to all of you. First of all, I must give you from the core of my heart the discipline you have shown. It's the same as I was the Olympian in 1983. I am the product. That's why I came early. I am saying very frankly, though we have done many of the programs. That's why I came early. It was 9:30, but I came at 9:15 rather because I wanted. I knew the discipline of OAM, and you are at the mark. I'm saying you rather more than that. Okay. So now I come to my respected dignitaries. Basically, sir. Okay. I am also in the Directorate of Education presently. Okay. Give you a little bit of push-up. Okay. Okay, little bit of. But discipline must be maintained. Little bit of slogans we get so that we can have energy level. Little bit of mind. Okay. सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, चंदा की किरण से उझल कर घन घोर अंधेरा भागे, चंदा की किरण से धुल कर घन घोर अंधेरा भागे. This is last line. जहाँ दूर नजर दौड़ाए आजाद गगन लहराए, गगन लहराए, जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए, हो कली जहाँ शाम सुहानी ढले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो,
बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। मुक्त गुरुग्राम की मंजिल मिले ना मिले ये अलग बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत है। और आप बच्चों के लिए है, बेटा ध्यान रखिएगा, the hard condition know the same. मैंने कहा ना technicalities I can go to any extent, IIT level, no problem. But I am coming to you at the your level, at the nursery level, KG level. तो मैं तुम आप ये सब बच्चों के लिए कि बदल जाओ वक्त के साथ, ये तुम्हारे उसके लिए भी कोर्स के लिए, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। अरे मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखो। ठीक है, ओके। एंड आई से लास्ट, ये मेरे प्यारे बच्चों की लास्ट लाइन, ओके चिल्ड्रन, आई एम गोइंग नाउ, कि मुश्किलें इस दुनिया में कुछ भी नहीं। कुछ बच्चे कहते होंगे, आई वाज सीइंग वो डिसेबल्ड चिल्ड्रन, मैं उनको इधर देख रहा था कि मुश्किलें इस दुनिया में कुछ भी नहीं। राजकुमार जी आप गौर फरमाइएगा, हमारे लोग अपने इरादे छोड़ देते हैं, अगर सच्चे दिल से हो चाहत कुछ पाने की, पूरा करो, अगर सच्चे दिल से हो चाहत कुछ पाने की तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। You know, the stars are fixed. So I request Sir CSO Raj for नो, किनके पास सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है? वेरी नाइस। आप भी क्या? एनीवे, so more than one account means you are using other account for some other purpose. So other purpose means जो सोशल मीडिया में जो अकाउंट्स होते हैं हमारे, जो आजकल काफी स्कूल्स में से कंप्लेंट्स में बड़ी करने के लिए, या कई बार क्या होता है टीचर्स का भी उनको मिसयूज करके और या स्कूल को डिफेम किया जाता है। तो इसका एक सिंपल वो मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी मोर देन वन अकाउंट उसको इस तरह के पर्पस के लिए % अगर कोई कंप्लेन आती है और उसमें सीरियस ऑफेंस है एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस है जिसके अंदर पनिशमेंट मिलता है। तो अगर सोशल मीडिया वैसे तो काउंट रखिए और इसको एज ए इसका मिसयूज ना करें, क्योंकि ये 100% ट्रेसेबल है। अभी जो फ्रॉड्स वगैरह की बात की है, तो फ्रॉड्स अगर हो जाता है फ्रॉड तो क्या करना चाहिए हमें इमीडिएटली, क्या स्टेप होना चाहिए? एंड okay then very nice. So immediately this system whoever it is, and they should know that they have to call to 1930. What is the number? 1930. 1930 का पर्पस ये होता है, ब्रीफ में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि ये फ्रॉड होता है तो मनी कैसे रोटेट होता है। कोई भी जो फ्रॉड वेस्ट साइड गुजरात और राजस्थान में समझे, एंड फाइनली ही विड्रॉज that money may be from some other location, maybe it's from Jharkhand, money जहाँ गया वहाँ का इन्वेस्टिगेशन करेगा, then second जो भी ट्रांसफर हुआ साउथ में, then वेस्टर्न जो पुलिस के पास टाइम लगता है, तो मनी विड्रॉ करके अपना यूज भी कर चुका होता है। एंड फिर भी अगर मान लो लास्ट वाले अकाउंट तक पहुंच भी गए, तो कई बार क्या होता है लास्ट में पुलिस भी पूरा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी कई बार कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि वो मिलता ही नहीं है वो। तो ये रीजन होता है कि कई बार इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी पैसा वापस नहीं आता, जो हम कहते हैं कि पुलिस ने कुछ नहीं किया, पुलिस काम नहीं कर रही। अब 1930 का पर्पस क्या है, इमीडिएटली जो हम बता रहे हैं, या तो 1930 या एक ऑनलाइन उसके आगे वो ट्रांसफर नहीं कर पाते, तो उसमें चांसेस बढ़ जाते हैं आपके मनी को वापस लेने के, वापस आने के। ब्लॉक कराइए, अकाउंट को ब्लॉक कराइए। अगर पहले बैंक में करते हैं तो पहले क्या करेगा, अकाउंट को ब्लॉक करके उसमें से ये मस्ट बी अवेयर, और आप लोग भी थ्रू योर पेरेंट्स और सम अदर फैमिली मेंबर्स, कि कई बार फ्रॉड होते हुए सामने वाला कहता है कि मैंने आपको क्यूआर कोड भेज दिया है, लाइक ओएलएक्स फ्रॉड होता है, रेंट वाला होता है कि मैं आपको रेंट ट्रांसफर कर रहा हूं, मैं आपका ये सामान ओएलएक्स से खरीद रहा हूं, इमीडिएटली आप भेज रहा हूं, आप क्यूआर कोड स्कैन कर लीजिए, आपके अकाउंट में मनी आ जाएगा। दैट मींस ही इज लाइक, क्यूआर कोड को हमेशा मनी भेजने के लिए होता है, अगर आप स्कैन करोगे तो आपके अकाउंट से मनी जाएगा, आएगा कभी नहीं। तो आपके साथ चीटिंग करना चाह रहा है, वो मनी लेना चाह रहा है, आपको देना नहीं चाह रहा। तो एक ये वाला है, उस टाइम हम जल्दबाजी में इस चीज को ध्यान नहीं रखते कि
QR कोड हमारा मनी भेजने के लिए होता है, ना कि रिसीव करने के लिए। तो जब भी आगे से कोई हो मनी ये QR कोड से रिलेटेड, डोंट स्कैन दैट QR कोड ऑनलाइन, और तो भी अगर कोई भेजता है चीज की जरूरत होती है, हेल्पलाइन नंबर या कोई भी चीज की जरूरत होती है, जो ट्रैकिंग फ्रॉड हो रहा है वो हेल्पलाइन नंबर से हो रहा है, चाहे ये बैंक का कस्टमर केयर हो या कोई जो जिससे कि आपका फ्रॉड करता है। और कस्टमर केयर का वो फेक नंबर होता है, जब भी करना हो आप उस पर जाइए। So, this information will surely reduce the threats against us and will increase the threat against the cyber criminals. I want to repeat myself again. Please get cyber certified. Read comic, give back to gurugram.com. I now request PSI Sir Deepak to come forward. Please. नमस्कार। नमस्कार। कैसे बचना है? सर ने, दीपक सर ने, CSO अनिल जी ने, CSO राजकुमार जी ने, तो जल्दी चीज़ों को कैच तो जल्दी कर लेते हैं, लेकिन उतना जल्दी भूल जाते हैं। और आपका एज ग्रुप ऐसा है कि चीज़ को समझने में थोड़ा टाइम लगता है, बट अगर वो चीज़ कोई एजुकेशन नहीं होती थी, अगर एक बार बता दिया कि आपको कोई शक्ति का प्रयोग करना है तो एक मंत्र एक बार बताया, उसके बाद आगे आपको बढ़ना है, आगे आप बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक हर एक चीज़ का प्रयोग करेंगे, तो उस चीज़ के लिए अभी से अगर आप तैयार रहेंगे तो वो बेस्ट हर एक चीज़ के अंदर, चाहे आप IT सेक्टर में जाए, कहीं भी जाए, आपको लैपटॉप की भी आवश्यकता होगी, फ़ोन की भी आवश्यकता होगी। मैं अब कुछ आंकड़ों पे आपकी नज़र डालूंगा। मैंने 2015 में साइबर क्राइम ज्वाइन किया था। उस समय एक साइबर सेल होती थी। ये है कि जितने हम ज़्यादा स्मार्ट हुए हैं हर एक चीज़ के अंदर, उतना ही साइबर क्राइम किस तरह से बढ़ रहा है। आज के दिन केवल गुरुग्राम की मैं बात करूं, गुरुग्राम के अंदर जो हमें कंप्लेंट आए हैं ये आपको बढ़ाते हैं, होता है। लेकिन आज के समय को देखते हुए युवा जनरेशन को भी जल्दी से भाई मैं अच्छी कपड़े पहनूं, अच्छी लाइफस्टाइल जीऊं, पब बार, मतलब गलत संगत, और जहाँ गलत पैसा आता है वहीं पे गलत संगत में बचा जाता है। जो रियल कॉल सेंटर हैं आपकी सुविधाओं के लिए, इसी तरह से चीटर्स ने भी कॉल सेंटर सेटअप किए हैं। वो सुबह तैयार होकर बैठते हैं, सोचते हैं 20 लोगों को कॉल करेंगे, 20 में से 5 तो कटेंगे, 5 लोगों से 5 लाख मिलेंगे, चाहे 10 लाख। पहला तो अपना आलस्य। हम आज इतने आलस्य में आ चुके हैं कि साथ में सुविधा भी है उस चीज़ का, लेकिन साथ में दुकान है, फिर भी हम ऑनलाइन सर्च करके या ऑर्डर कर देते हैं और वहाँ पे चेक नहीं करते हैं। दूसरा है बहर। हमारे पास फोन आता है, अभी कुछ एक वीक पहले 21-22 साल की लड़की आई और इस कुरियर के अंदर है ना फर्जी पासपोर्ट है और विदेशी पासपोर्ट है। वो आसाम से यहाँ गुड़गांव में जॉब करने के लिए आई थी, उसकी मदर आसाम में थी, और वो 30 लाख रुपए उसने 2 दिन के अंदर अंदर उन चीटर्स को दे दिए। ये गलत जब आपने किया नहीं है तो उस चीज़ के लिए डरना नहीं। बैठी हैं टीचर्स, बैठे हैं यहाँ पे स्कूल में, कंप्लेंट आई हमारे पास टीचर्स की भी क्लास है, तो ये चीज़ आप दिमाग में sir, my question to you is, like now, for example, Truecaller, like that app will let us know whether the call number we are receiving call from is verified or not. So just a few weeks ago, something happened CAI Foundation, and it showed me that it is a verified number. So I just I had filled CA form for my sister, and I received a call, and I submitted those account details in the applicant form which we submitted for CA. So, sir, we were quite, I'm not
like I was as accompanied by my parents. I didn't take any wrong step and didn't share any account details. But what if someone else was there at my place? Because there wasn't any evidence that we could find whether it is an unknown source or a verified source. The question is whether the caller is verified or not is a big question. Ministry of Telecommunication is also doing some work in this regard. If some iPhone app, and there are so many apps, they are showing something else. How could we show that it is a original caller or someone else is impersonating? Okay, first of all, you need to be double verified that caller is from my known site or it is saved in my contact list. First of all, you need to verify it is in my contact list. It cloud platform. It took data from all the sources and synchronize it and give you the output. If I took my name as Raja Ahir, but my name is Deepak Kumar, I write down on my Truecaller Raja Ahir, it will show you Raja Ahir. Okay, it means Truecaller is not right. Whatever someone is editing in their names on Truecaller, it will only show that name. Okay, for that purpose, you can use MNP, mobile number portability. There is one site, Cyber. We need to be more conscious and give some reasoning thoughts to that query which is arising on our mind, whether this is true or not true. Okay. Phishing. I don't want to take you to the jargons of cybercrime, but I will tell you what is phishing. Okay. Some hackers make a page look like the website you are trying to log in. If we took the example of Facebook, he make a page of Facebook look like page of your passwords and credentials. It will go to the hacker only, not to the Facebook. Okay, this is phishing. Phishing means just to take your credentials in the name of originality. You find a link on SMS or your email or any other platform that please update your details by clicking this link. It means when you click the link, it will be look like it may be bank website, it may be a social website. You try to log in, that particular credentials will go to the hacker server, not to the site. Understood? This is called you receive links on SMS. Small URL shortening links on your SMS, and when you click the link, it will take you to the site. Then after you enter your credentials and you lose your password or maybe PIN. So how do they get information and education regarding these cyber crimes? How do they commit them? Yeah, with you, but because of time constraint, I might be forget. That is the data stealing or data theft. Okay, we actually everyone when you use internet, we leave some digital footprints on internet. Whenever you search a site, Google analytics works, AI works, and all the data is on internet. They purchase that data from vendors, from sites, and also your data also on dark web, from dark websites. Okay, they call you, Mr. Singh is calling, it may be also Google. Thousands of data websites daily are hacked by hackers, and it is available online. It is not a big issue. Right now, when you log into your social media accounts, you enter your details. 3 days ago, my father's number was showing fraud, but we were able. So we were a bit confused that it is hacked or what. We didn't understand. So my main question is that people have apps also like Truecaller. It was showing fraud on Truecaller. Spamming your number or block it like by giving the comments fraud to the advertisers because they only earn money from this only. Okay, so it is relating. It's like extortion also. You need to talk to Truecaller and just tell them my number is showing as a fraud. Then they ask some people block you.
because you are small people, you can be manipulated anytime. There are people who are masked online. It may be a good for you. Thank you. तो इस तरह के किस हाईटेक जमाने में वो क्राइम को अंजाम दे पा रहे हैं। बच्चा है, स्कूल भी नहीं गया, लेकिन वो फोन के अंदर इतना अंदर चला जाता है कि उसके सामने उसकी माँ कहती मैं अभी इतना खोल नहीं पाती, पता नहीं कहाँ से यूट्यूब चला लेता है। तो जिसको फोन पे सोशल मीडिया अकाउंट जिसका है वो फोन के अंदर कहीं भी जा सकता है। उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है इस चीज़ के लिए। आपने अगर वेब क्वेश्चन होते हैं कि फ़ोन नंबर लाइव है, लोकेशन आ रही है, अकाउंट आ गया, और ये अकाउंट आने के बाद भी इसमें कुछ क्रिमिनल को हमने अरेस्ट किया है, बट फिर भी हमारे पास कंप्लेंट बढ़ती जा रही है। तो साइबर अवेयरनेस एक सबसे बड़ा इस चीज़ को रोकने के लिए माध्यम है। तो इस चीज़ को आप आगे भी बढ़ाएं। Sister Principal, Sister Selsa, to come upon and speak a few words. That is thank you. We are really very happy. We were waiting for this day, and we really feel proud of this whole group that is here, that you are taking this great mission of bringing awareness to all of us. Thank you so much. May God bless you and this noble work that you are doing. Let us get success 100%. That's our prayer. Thank you. God bless all of you. This technologically driven age where the internet plays an integral role in our lives. It is imperative that we equip ourselves with the knowledge and skills to navigate this digital landscape safely and securely. The session, conducted by the Sir and the professionals, has been an eye-opener for us teachers, students and staff alike, shedding light on the potential risks and best practices to mitigate them. We are truly fortunate to have had such an experienced and knowledgeable team guide us to the intricacies of cyber awareness. Your insights, practical tips, and real-world examples have left a lasting impact on our school community. Sir, we thank you on behalf of our school for this helpful and fruitful session. Thank you. Now I request everyone